तेज आसतु देखा केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षर एक सांबादिक सम्मेलन आयोजन कर सीधा प्रसारण देखा। It means that the person has been infected in the past. And what do we expect from these serosurveys? We expect to see the percentage in the general population, who is at a higher risk of getting infection, which are the areas which need more contained efforts, which need to be strengthened. And the objective is to provide scientific guidance from time to time, and that is the purpose of this, one of the very early surveys that we have done, and multiple surveys will be done as we go on to guide. And similarly, we have been providing the scientific evidence either through the National Task Force or the Joint Monitoring Group to the government, which is the National Task Force chairman is Dr. Vinod Paul, and the Joint Monitoring Group is chairman of the DGHS, and we've been providing scientific evidence. So now let's come to this sero survey. So this was the first sero survey conducted in May in collaboration with the state health departments, in collaboration with the NCDC and the WHO. And basically it had two parts. The first part was to estimate a fraction of population to be infected with SARS-CoV in the general population, and that is the part that is completed at the moment. And the second part is to look at the prevalence of this SARS-CoV-2 infection in containment zones in hotspot cities, and that is ongoing as we speak. Now the data was collected, as I mentioned. We took it a written informed consent and ethics clearance, and 3 to 5 ml of venous blood was taken, and then this sera was evaluated for the IG antibodies by the ELISA test, and this ELISA test is also being made available to the states to carry out sero survey in different groups of individuals within their states. Now in this, the part one of the survey, which is complete, we had was a population-based sero survey in which several districts were studied and divided into 4 groups, and in each group, whether it is 0 prevalence by RT-PCR or 0 to 5 or 5 to 10 or more than 10% per million cases in different districts, were divided into 4 groups, and 15 districts were in each group, and 400 individuals were studied from each district. And then from each village or urban area, we selected 10 villages and 40 adults, and every household one adult was studied. So we actually studied about 83 districts in the country, and number of households that were visited were 28,595, and we were able to collect the blood samples and the data from 26,400 individuals. The results were that we found that about 0.73% of the population in these districts showed a prevalence of past exposure to SARS-CoV-2 infection. This means that the lockdown and the containment measures have been successful in keeping it low and preventing rapid spread of this disease over the last 3 months as we speak. However, it means that a large proportion of the population is still susceptible. And which were the individuals which were higher at risk? Risks was slightly higher in urban areas, 1.09 compared to 1, and it was higher in urban slums, nearly 1.89 times higher than rural areas. But the good news is that the infection fatality rate was very low. It was 0.08% as far as this 26,000 individuals was looking at the population. The infection in the containment zone were found to be high and variable, and this is still ongoing, and this data is still being looked at. So in conclusion, I would like to say, since a large proportion of our population is still vulnerable and susceptible to infection, we have to work on the non-pharmacological interventions such as physical distancing, use of face mask, hand hygiene, cough etiquette, and urban slums are
are highly vulnerable for the spread of infection, and the local lockdown measures need to continue as advised by the Government of India, particularly in those containment areas, and they have been successful up till now in containing them. And the high-risk groups of our population, that is the elderly, people with chronic morbidities, pregnant women, children below the age of 10 years, they need to be particularly protected, and efforts to limit the scale and spread of the disease will have to be continued by strong implementation of containment strategies by all the states, and the states cannot, and I emphasize here, the states cannot lower their guard and need to keep on implementing effective surveillance and containment strategies for preventing the spread of this disease. So I will stop here, and I'd request Professor Vinod Paul to give his wisdom. Thank you, Professor Bhargav. You can have the last slide on, conclusion slide if possible. So आज एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, सूचना, डेटा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी स्टडी हुई है। 24,000 लगभग इसमें पार्टिसिपेंट सम्मिलित हैं। उन ज़िलों में जाके सैंपल्स को कलेक्ट किया गया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई, और मेरा अंदाज़ा है कि ये शायद दुनिया का सबसे बड़ा सीरो एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे है कोविड के परिप्रेक्ष्य में। तो इसका महत्व हमारे लिए सबसे पहले तो ये है कि इस तरह की नॉलेज, इस तरह की इंफॉर्मेशन हमारे कोविड की रिस्पांस को, देश की जो स्ट्रैटेजी है उसको ये फाइन ट्यून करती है। साइंस हमें कोविड को रिस्पॉन्ड करने के लिए, कोविड को जीतने के लिए जो हमें गाइड करता है वो हमारी स्ट्रैटेजी का एक केंद्र बिंदु है, और ये उसी श्रृंखला में एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टडी आपके सामने प्रस्तुत की गई है। इससे जो उभर के आता है वो ये है, जैसे डॉक्टर भार्गव ने क्लियरली कहा, कि इन ज़िलों में देखा जाए तो 1% से लेस पॉपुलेशन, 0.73 पॉपुलेशन में कोविड का प्रकोप अभी तक हुआ है। आपको ये भी एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि ये जो रिज़ल्ट हम देख रहे हैं, ये 30 अप्रैल के लगभग जो स्थिति है वो उसको दर्शाते हैं ये, क्योंकि ये स्टडी जो करी गई वो 3rd वीक ऑफ मई में करी गई मोस्टली, और 15 दिन लगते हैं एंटीबॉडी को आने के लिए। तो जो स्थिति दिखाई दे रही है ब्रॉडली, वो हम कह सकते हैं कि लगभग 5 हफ्ते लॉकडाउन के बाद की जो स्थिति है, 5 साढ़े 5 हफ्ते की, वो हम आज देख रहे हैं। तो कम से कम उस स्टेज पे देखें अगर, तो इसका जो प्रकोप है हमारे देश में, इन ज़िलों में लेस देन 1% पॉपुलेशन में आया है। इतने बड़े देश में इतने लेवल पे इस पैंडेमिक को देश ने रखा, ये अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से ये वायरस फैलता है, जो वायरस की मंशा है वो बहुत फास्ट स्प्रेड होता है, और उसके बारे में जितना भी हम जानते हैं यही कह सकते हैं कि इस डेटा के बेस के ऊपर कि इसको इस लेवल तक सप्रेस रखा है, इस लेवल पे ये पेंडेमिक हमारे देश में अभी तक मौजूद है 30 अप्रैल की दृष्टि से, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके साथ ही जो दूसरी बहुत बड़ी बात उभर के आ रही है, और सिर्फ इस डेटा से नहीं आती, वो जो डेटा हेल्थ मिनिस्ट्री आपके साथ साझा करते हैं वो ये है कि मोर्टेलिटी रेट जो है देश में इस पेंडेमिक की वजह से वो क्लियरली लो है, और ये खुशकिस्मती की भी बात है, और ये भी एक तसल्ली देता है कि अगर हम इस पेंडेमिक में लो मोर्टेलिटी को रखते रखते निकल जाएंगे, बच जाएंगे, तो ये एक देश के लिए बड़ी अचीवमेंट होगी। और इनफैक्ट किसी भी महामारी में और भी कई गोल होते हैं, लेकिन सबसे सेंट्रल जो गोल होता है वो यही होता है कि जो लॉस ऑफ लाइफ है वो मिनिमम हो। तो इस स्टडी से ये भी दर्शाया गया है कि मोर्टेलिटी लो है, और यही डेटा लव आपसे साझा करते रहते हैं कि हमारे देश का जो मोर्टेलिटी रेट है, और इनफैक्ट ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि वो इम्प्रूव फर्दर हो रहा है। अगर आप कंफर्म केसेस की मोर्टेलिटी का डेटा देखते हैं, जैसे 15 मई को
3.3% है, आज हम इसको कंसिस्टेंटली 2.8% देखते हैं। तो और वैसे भी जो प्रदेशों से जो खबर आती है उसको अगर डेटा को देखें तो कंसिस्टेंटली हम मोर्टेलिटी को नीचे रखने में सब इसमें सक्सेसफुल हुए हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ये तो इंफॉर्मेशन जो हमारे सामने आ रही है। इसका दूसरा पहलू डॉक्टर भार्गव ने बड़े क्लियर तरीके से पहली लाइन में लिखा है, और वो ये है कि अगर हम इस स्टेज पे थे 30 अप्रैल को और अभी भी हम अर्ली स्टेज में हैं, तो हमारी पॉपुलेशन अभी भी ससेप्टेबल है।